Very warm, good Saturday morning. Today we are going to discuss something which has been in limelight for quite some time. That is, people while exercising in the gym, they get chest pain, and many a times there is a problem associated with that. So, आपने भी सुना होगा कई famous celebrities they met with this gym accident when they were exercising. Suddenly they had chest pain, and many a times patient um, could not be survived despite the best efforts. तो क्या कारण है और क्या चेस्ट पेन अगर होता है ड्यूरिंग जिम, इज इट ऑलवेज बैड एंड व्हाट कैन बी डन टू प्रिवेंट दैट? चेस्ट पेन एक्सरसाइज के समय कई कारणों से हो सकता है और ऑफ कोर्स हार्ट के ऊपर लोगों का ध्यान सबसे पहले जाता है, एंड दैट इज राइटली सो बिकॉज even if it's not a heart pain, but we must consider chest pain originating from heart rather than ignoring it. So we are on the side of wrong, maybe, because caution is more important बजाय इसके कि हम उससे लापरवाही करें. तो जब भी चेस्ट पेन होता है हमें हमेशा सोचना चाहिए कि ये हार्ट की वजह से तो नहीं है. There are few hints that this pain could not or could be due to chest, could be due to heart. अगर आपको ऐसा लगता है कि ये किसी ने बहुत स्क्वीज कर दिया है आपके चेस्ट को या प्रेशर है, जो लिटरेचर में डिस्क्राइब किया है, पेशेंट्स फील एज इफ एलिफेंट इज सिटिंग ऑन द चेस्ट और suffocation होता है, and this suffocation travels actually to your jaw, to your teeth, to both arms, shoulder, inner side of your arms. तो ये क्लासिकल चेस्ट पेन है, और अगर इसके साथ सांस भी चढ़ा है और उसके साथ साथ डिजीनेस हो रही है तो 100% ये चेस्ट पेन है. प्लीज स्टॉप एक्सरसाइजिंग. That is the first and foremost thing that you can do, is to stop exercising. Please don't push yourself further. Get out of that exercise that you're doing and then call for help. तो ये एक कॉपी बुक एक सिनारियो है जब चेस्ट पेन जो है वो क्लासिकल चेस्ट पेन हार्ट से हो रहा है. But then there are other issues as well, especially with athletes, that they get chest pain which may not be due to heart disease. कई बार एक सुई जैसी चुभती है जब वो लोग स्ट्रेच कर रहे होते हैं, और कई बार एक सिक्के के आकार का दर्द होता है, and that is more often not due to heart disease, and that though it should be investigated, but it is not a cause of panic. अ, कई बार रिपीटेड चेस्ट इंजरीज होती हैं स्ट्रेचिंग से, और अपने आप को जब वेट लिफ्ट करते हैं एथलीट्स और जो लोग जिम जाते हैं, तो उनकी वजह से जो हमारा रिब केज है वहाँ पे जहाँ रिब लगते हैं वहाँ पे स्वेलिंग हो जाती है, और इसको कॉस्ट्रोकॉन्ड्राइटिस कहा जाता है. ये सामने ही होता है चेस्ट के, एंड इट्स क्वाइट अ डिस्ट्रेसिंग प्रॉब्लम. But remember, it's an inflammation of the bone and nothing to do with the heart. So costochondritis is common, especially in trained athletes, because they keep on exercising to the maximum, and their ribs they get injured, or the muscles they get pulled up, and these musculoskeletal pains also form a part of chest pain that happens during the exercise. एक अनदर इम्पॉर्टेंट कॉज है, और वो है जिसको हम एसिडिटी और हार्ट बर्न कहते हैं. ये हार्ट बर्न बेसिकली हमारी फूड पाइप जब हमारे स्टमक से मिलती है तो वहाँ पे एक वैल्व होता है which doesn't let the food contents to go back. But at times Code this red ground floor lab room number B092. Code red ground floor lab room number B092. Code red
ground floor, lab, room number B092. आई एम सॉरी फॉर दैट इंटरप्शन. सो हार्टबर्न एक सिचुएशन है जबकि स्टमक के कंटेंट्स दे कम अप इन द फूड पाइप, एंड द फूड पाइप इज वेयर योर चेस्ट इज, and you start getting burning sensation here. This is more common, especially if previous night आपने बहुत heavy party किया है या drinks लिए हैं and full stomach खाना खाया है. So that is more common, and you need to see a gastroenterologist for that rather than a cardiologist, and you don't have to believe that you have a heart attack. और भी कारण होते हैं, and some of them are maybe more bad than heart attack. One of them is aortic dissection. Aortic dissection happens when the main artery of the body it gets ruptured. It's more common in smokers, it's more common in pregnant females, it's more common in hypertensives, and ये एक emergency of first order है, and if that happens the patient has to go to the hospital immediately. But fortunately it's very rare, so you don't have to bother about that. More common causes could be muscle sprain or muscle pull. That is very common because gym में लोग कई बार they try to do exercise which is not convenient to them, and many people try to do too much and too fast. So in the excitement of joining a gymnasium and trying to get results that are quick, many a times people try to do unaccustomed exercises. So this is bad because whenever there is a pain happening to you, जब भी आपको दर्द हो रहा है, तो there is a reason for that. So we really need to sit down and find out what's the reason, and then we can continue our exercise. उसके अलावा एक और प्रॉब्लम होती है जो कि वायरल इन्फेक्शन का सीक्वली होती है, जैसे कि हमारा हार्ट है उसके चारों तरफ एक एक लेयर होती है जिसे पेरिकार्डियम कहते हैं. अगर इसका इन्फ्लेमेशन हो जाए जो कि एज कॉमन एज अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन से भी हो सकता है, तो पेरिकार्डाइटिस एक पेन है जो कि काफ़ी तंग करता है, काफ़ी डिस्ट्रेसिंग होता है, एंड इट्स रिलीव वंस यू नो try to push yourself forward, it becomes less. But ECG भी इसमें abnormal हो सकता है, and your doctor would be able to tell you that it's not heart attack, but it's a pain for which you need common analgesics such as aspirin or brufen. तो उसको लेने से ये ठीक हो जाता है. कई लंग्स के भी कारण होते हैं जिनकी वजह से चेस्ट पेन होता है, जैसे पेरिकार्डियम है वैसे लंग्स के चारों तरफ लेयर को प्लूरा कहते हैं. प्लूरसी इज अनदर कॉज. अगेन इन्फेक्शन ऑफ द लंग्स कैन कॉज प्लूरसी, and that may cause pain to the person, and this is again not as serious condition as heart attack is. रिब फ्रैक्चर्स हो जाते हैं कई लोगों को, वो उनको तंग करते हैं, एंड दैट इज अगेन अ रीजन दैट दीज पेशेंट्स दे गेट चेस्ट पेन. कई पेट के भी ऐसे इशू हैं और उनमें से गॉल ब्लैडर इज वन ऑफ द रीजन दैट पीपल मे गेट चेस्ट पेन. बट ये पेन लोअर राइट साइड पे होता है और इसमें एसिड सिम्टम्स बहुत ज़्यादा होते हैं, और इसको अगेन वी डोंट हैव टू कंफ्यूज विद हार्ट अटैक. Pancreatitis is another condition, but this is way down, but at times it causes chest pain in the center, low down, और इसके कारण डिफरेंट हैं. अल्कोहल उसमें से एक है, और अगेन इसमें एसिड सिम्टम्स बहुत ज़्यादा होते हैं, और इसका अगेन इन्वेस्टिगेशन ट्रीटमेंट स्पेशलाइज्ड है जिसके लिए हमें गेस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट से ज़रूर मिलना चाहिए. तो फ्रेंड्स, दीज आर द प्रॉबेबल कॉजेज, एंड रिमेंबर जिन लोगों को चेस्ट पेन होती है जिम्नेशियम में, ऑलमोस्ट 90% ऑफ देम इज नॉट ड्यू टू हार्ट डिजीज. बट ऑफ कोर्स अगर चेस्ट पेन हो रही है, रेकरेंट चेस्ट पेन हो रही है,
खासकर जब आप एक्सरसाइज करते हैं तब होती है, और जब आप रुक जाते हैं तो ख़त्म हो जाती है। तो ये डेफ़िनेटली चेस्ट पेन हार्ट की वजह से है। इसके अलावा मैंने इसकी और कैरेक्टरिस्टिक्स भी आपको बताई हैं। सो फॉर दैट यू रियली नीड टू गो एंड सी योर डॉक्टर एंड गेट द ट्रीटमेंट डन। It's imperative that whenever you join gymnasium or any exercise program, you must talk to your cardiologist and you must know your numbers. So know your numbers से मतलब है कि आपको पता होना चाहिए कि आपका ब्लड प्रेशर कितना है, आपकी एक्सरसाइज कैपेसिटी कितनी है, आपका इको में इजेक्शन फ्रैक्शन कितना है, आपका ईसीजी कैसा है, और आपकी ब्लड शुगर वैल्यूज कैसी हैं, कोलेस्ट्रॉल कैसा है. सो दीज नंबर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट. And once a doctor believes that you are fit to join an exercise program, then of course it's easy for the person to go forward. Uh, एक word I'd like to add for the supplements that our children and young adults are very fond of. These supplements have not met the clinical trials most of the times, और इनमें कई ऐसे सब्सटेंसेस हो सकते हैं जो कि नुकसान ज़्यादा पहुंचाएं बजाय इसके कि हेल्प होने के. So every year we see a couple of patients who come with heart attack, and these are the patients who are on supplements, and they do not have any risk factors. But again, they try to achieve too much in too little time, and that is one reason that they come back to us. Hydration is important. Remember, you don't have to push yourself as if you are exercising in a desert. So remember कि आप अपने आप को हाइड्रेट रखें जिम्नेशियम में, और अच्छे से आप तब एक्सरसाइज कर पाएंगे जब आपका वाटर लेवल बॉडी में ठीक है. So, friends, this was an attempt to, get yourself acquainted with this very prevalent problem, I would say, because headlines बहुत ज़्यादा आती हैं इसमें जब किसी celebrity के साथ कुछ होता है. Otherwise, also we keep seeing videos on social media where people are exercising and suddenly they meet an accident. So ये बहुत ज़रूरी है कि हम इसके बारे में जानें, and I would request you to share this video as much as possible, and you can send your comments also, and you may like it also, and you may subscribe this, because we keep coming with videos like this for journal awareness, for dissemination of information that is in everybody's everyday life, and which can help people to be better and attain good health. थैंक यू. और अगर आपके कोई सवाल हैं, आई विल बी वेरी हैप्पी टू आंसर देम. प्रियंका सक्सेना पांडे जी ने पूछा है, इज इट सेफ टू एक्सरसाइज इफ आई हैव हिस्ट्री ऑफ हार्ट प्रॉब्लम्स? Well, even if a heart problem has happened, as a part of convalescence, as a part of rehabilitation, we always advise that exercise program जरूर ज्वाइन करना चाहिए, बिकॉज योर हार्ट गेट स्टेमिना, उसमें ताकत आती है, और वो फर्दर इंसल्ट के लिए अपने आप को तैयार करता है. पर इसके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है कि यू मस्ट मीट योर डॉक्टर, यू मस्ट मीट योर कार्डियोलॉजिस्ट हु इज ट्रीटिंग द पेशेंट, और उसकी सलाह जरूर माननी है. ही माइट आस्क यू टू अंडरगो अ एक्सरसाइज टेस्ट, treadmill test, if he believes you can do that, and then get his clearance and ask clearly that how much exercise is needed. Remember, aerobics are better for heart patient, but still strength building exercises भी try करनी चाहिए, and that gives not only the necessary stamina, but also एक feel good factor आता है of being healthy. So heart patients, they don't have to exercise is not true. In fact, they must join an exercise program according to the capacity and according to the level of their disease. प्रीति ने पूछा है, what steps can I take to prevent chest pain during exercise? First and foremost, talk to your doctor before you join an exercise program. That's very important.
and then don't get into the trap of achieving too soon too fast, as I said earlier. तो आपको ये याद रखना है कि ये बहुत लंबा एक प्रोसेस है. कई द पीपल हु आर एक्चुअली have built their bodies in gymnasium, they have taken years to reach there, and it needs sustained effort at a regular interval, and it has to be steady. तो पहले ही दिन हम सब जब अचीव करने की कोशिश करते हैं, मैंने देखा है कई बार जिम्नेजियम में, even if there is pain, then people try to navigate that pain and keep on trying and pushing themselves in spite of constant pain. So that is need to be addressed, और हमको अपनी कैपेसिटी पता होनी चाहिए, एक्सरसाइज कैपेसिटी. जस्ट गो बिलो दैट and then steadily increase over a period of time, weeks, and then of course that is one way of not succumbing to problems during exercise. Hydration is important, as I said, and please don't take any supplements. Kishore ने पूछा है, how can I know if my chest pain during exercise is related to my heart? As I said earlier, that if you get a squeezing sensation in your chest, as if a pressure has been applied to your chest, I use the term elephant sitting on the chest, and there is profuse diaphoresis, which is sweating, बहुत पसीना आ रहा है, पेन जॉ में जा रहा है, दांतों में जा रहा है, और आपके दोनों आर्म्स में जा रहा है, सफोकेशन लग रही है, डिजीनेस लग रही है, then breathing difficulty है. This is classical chest pain due to heart disease, and we must seek opinion of a doctor. In fact, not opinion, help from the doctor. So reach hospital immediately. Pallavi ने पूछा है, what are the most common causes of chest pain during exercise? So we have just discussed. रन थ्रू अगर करें तो हार्ट अटैक हो सकता है, पेरिकार्डाइटिस हो सकती है, कॉस्ट्रोकॉन्ड्राइटिस हो सकती है, रिब फ्रैक्चर हो सकता है, हार्ट बर्न हो सकता है, गॉल ब्लैडर डिजीज हो सकती है, पैनक्रेटाइटिस हो सकती है, पेरिकार्डाइटिस हो सकती है, प्लूरसी हो सकती है, लंग के इन्फेक्शंस हो सकते हैं. So these are the common causes where you may get chest pain during exercise. गौरव ने पूछा है, can chest pain during exercise be a sign of heart attack? Definitely, as I said, even if it is not, we should always believe that it could be due to heart, because caution is very important. और अगर ये नहीं निकलता है, जैसा मैंने बताया कि लगभग 90% टाइम्स चेस्ट पेन्स जो जिम्नेजियम में होते हैं, दे आर नॉट ड्यू टू सीरियस डिसऑर्डर्स, एंड इन फैक्ट नॉट ड्यू टू हार्ट डिजीज. पर अगर होता है, then please take opinion of the doctor. So, friends, I do not see any more questions, and I hope that you liked the effort. Thank you. Have a very good Saturday today, and we keep coming back to you with videos like this. आप इनको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें. Thank you and have a good day. Thank you.